तुम पहले कहाँ बैठे हो, मेरे को समझाओ। कॉफी शॉप में ऐसा कमरा मिलता कैसे? ये कॉफी शॉप नहीं है, ये ऐसे को वर्किंग स्पेस टाइप ही है, पर इसमें जो अच्छी बात है कि इसमें को वर्किंग नहीं है, क्योंकि इस रूम में दो आदमी नहीं आ सकता। ये फोर्सफुल कडलिंग होगा, इस रूम में दो आदमी आएगा तो। चलो फिर शुरू करते हैं। Hello, guys. This is We Need to Talk. So we are a new podcast, and so our main goal is to talk about, or have a conversation that we are sort of, like we should be having, or maybe we have skipped it in the past, or the things that we find interesting and stuff. So yeah, so like this is a very new thing that we're trying out. So yeah, let's hope this goes well. Our tagline is, by the way, the preamble of a serious conversation is always funny, right? We Need to Talk is always a preamble for a serious conversation, right? So yeah, you guys should visit the website. We have a website. You guys should visit, and we'll put that in the description. Okay. चलो फिर शिवांग, क्या है टॉपिक आज का? लाइक व्हाट्स योर टॉपिक, क्या लेके आए हो टेबल पे? सी द वन थिंग दैट आई कैन ऑलवेज टॉक अबाउट, कितना भी कैसे भी, स्पोर्ट्स। ठीक है, और मेरे को स्पोर्ट्स। लगता है जितना स्पोर्ट्स ने मेरी लाइफ में अभी तक ऐड किया है, और जितना मतलब जैसे सब कुछ मैंने जितना स्पोर्ट्स के बारे में सीखा अपने भाई से सीखा है, और जितना मेरे ख्याल से उनकी लाइफ में भी या मेरे साथ जितने भी लोग हैं, सबकी लाइफ में स्पोर्ट्स ने ऐड किया है। बीट इट लाइक पर्सनालिटी वाइज या ग्रोथ वाइज, लर्निंग्स वाइज, ह्यूमिलिटी वाइज, आई थिंक नहीं किया है किसी ने। तो मतलब फ्रॉम माय एंड दैट वुड बी द परफेक्ट स्टार्टर फॉर माय कॉन्वर्सेशन। चलो फिर सो स्पोर्ट्स मतलब आई मीन you guys should meet us physically. मतलब I don't look like a sports person at all. Shivang is a hardcore sports guy, by the way. But yeah, like, so what about sports? So like, uh, there are really life-changing lessons. Obviously, we learn from sports. I think that's pretty evident, and we're going to listen a lot of. मतलब अभी सब stories सुनेंगे हम लोग. But yeah, like, what's your favorite sport? Let's start with that. Okay, I think there is one clear-cut answer, which is cricket, and I think uh, you ask 1.4 billion other people at least. The answer Yeah. is going to be cricket for sure, and I mean, I don't have a doubt in my mind. I have played a lot of badminton in my life. I've played a lot of like other sports, but there's this one sport that stands out for me. I don't know the reason. Honestly, एक मेरे को काफी एक चीज रियलाइज हुई कि क्रिकेट बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, एंड आई थिंक वो स्पोर्ट्स नहीं है, अब वो एक स्पोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रांस में आया तो मैनी पीपल यूज टू लाइक आस्क मी कि व्हाट इज क्रिकेट, यू नो, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाट आर द रूल्स। एंड जब मैंने सबको लाइक ऐसे सोचा कि बात करना शुरू की क्रिकेट के बारे में, तो मेरे को जो एक चीज समझ आई कि यार मेरे को कैसे आया था पहली बार मतलब क्रिकेट खेलना, बिकॉज कुछ ज्यादा ही पैरामीटर्स हैं इसमें। मतलब मैं समझाने बैठा एंड आई वाज लाइक कि इसको समझाने में मेरे को एक आध साल लगेगा, एंड लाइक इसको मैं समझा नहीं सकता हूँ, ही नीड्स टू वॉच, ही नीड्स टू प्ले। सो हाउ इन द बिगिनिंग वाज आई एबल टू लर्न द स्पोर्ट? तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था मेरा इस बार क्रिकेट के वो बारे में ऐसे कि इंडियंस के लिए लर्निंग नहीं होता है वो, बस यू आर जस्ट, मतलब इफ यू डोंट अडेप्ट वो तुमको बॉल लेने भेजेंगे। ठीक है? तो हाँ, बचपन में लर्निंग नाम की चीज नहीं होती है, यू हैव टू जस्ट लर्न, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होता है। मैंने शायद वैसे ही सीखा है, क्योंकि अगेन मेरा बड़ा भाई था तो मैं उनके दोस्तों के साथ खेलता था, एंड 3 बॉल खेलने मिलता था, उसमें भी मतलब वो धीरे डालते थे और बहुत बच्चों टाइप ट्रीट किया जाता था। तो काफी एक हंगर था, वहां से हंगर आया एक अपने आप को एक बेहतर करने का, काफी फोर्स था वो हंगर, काफी इम्पोज था कि नहीं करोगे तो कुछ इज्जत नहीं मिलेगा। तो काफी जो इंट्रोडक्शन था लाइफ के बारे में वो बहुत बचपन में मिल गया था। काफी मतलब अगर मैं अभी देखूं पीछे तो बहुत ही सैड है। बट आई थिंक एक अच्छा इंट्रोडक्शन था और उससे काफी लाइक सीखने मिला। हम्म, सही है। मतलब स्पोर्ट्स मतलब या लाइक अभी रिसेंटली तो स्पोर्ट्स बहुत कम हो गया है लाइफ में। आई मीन वी आर स्टूडेंट्स, बाय द वे, फ्रॉम एनयूएस. So yeah, obviously Shivang doesn't live in Paris. Yeah, He'll soon out. please, I'm not a Parisian, and I don't want to be one. So yeah, so like we are actually out of India, but we study in Singapore. So yeah, like so sports, right? मतलब
हाँ, स्पोर्ट्स से तो बहुत चीजें सीखने मिलती हैं। आई थिंक अ मेजर पार्ट ऑफ माई फिजिकल फॉर्मेशन और माई फिजिकल बिल्ड itself is due to the sports that I've played in India. मतलब माना कि मैं बाहर आके छोड़ फॉर दिया श्योर, उसे, फॉर श्योर। like your health is good, you have, you're so active, मतलब कुछ भी ऐसे मतलब हाँ ऐसे मजा भी आता है, ऐसे मतलब बकचोदी तो बहुत होती ही रहती है इंडियन। अब कुछ भी खेल लो, कुछ कितना भी फॉर्मल हो स्पोर्ट, आई डोंट थिंक इंडियंस कैन एवर प्ले गोल्फ। लाइक नहीं, नहीं हो पाएगा, उतने जगह पे 15 क्रिकेट ग्राउंड बनेंगे। तो I think it's not about a sport. I think what golf requires, one thing is patience, which Indians don't have. मतलब uh, एक तो the fact that there is no like in sports in cricket, one good thing is if you're a bowler you're disrespected. In golf it's like everyone has a like if you need to play golf you need to like swing. और इंडिया या में उसका बहुत फैसिनेशन है। और इंडिया में ना एक अच्छा डिवाइड है कि अगर आप बॉलर हो तो आप एक मतलब यू आर नॉट एज गुड अ क्रिकेटर एज अ बैट्समैन। जिनको भी क्रिकेट के बारे में पता है उनको ही पता होगा। तो गोल्फ में ना वो नहीं है। गोल्फ में अगर आप खेल रहे हो तो सबका रिस्पेक्ट करो। और काफी काफी अलग कल्चर है जितना इंडिया में। इंडिया मजा नहीं आएगा लोगों को। हाँ हाँ हाँ, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। अच्छा तो cricket ka, so like how was your, I mean if you want to discuss like how was your journey or what, so your main introduction to cricket started from with your brother or फिर बाद में like maybe life lessons here and there, or what are you doing with cricket right now or anything, yeah. सो आई थिंक क्रिकेट का इंट्रोडक्शन अगेन मेरे भाई को काफी पसंद था एंड माई ब्रदर इज 7 years ओल्डर टू मी। तो मतलब जो वो करते थे वही करना था पीछे पीछे। और काफी मतलब ऑब्सेशन बचपन से ही शुरू हो गया कि खाना खाना है तो साथ में हाथ में बैट चाहिए या बॉल चाहिए और खेलना है। तो वन थिंग दैट मतलब जब खेलना शुरू किया और उससे आया वाज कि काफी काफी एक चैलेंजिंग स्पोर्ट था क्योंकि मतलब अगेन सब लोग साथ में खेलते हैं, बड़े लोग छोटे लोग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि बड़े नहीं खेल सकते या छोटे नहीं खेल सकते। क्योंकि एक तो फिजिकली थोड़ा टोलिंग कम होता है। इफ यू वांट इट टू बी इट कैन बी लेस टोलिंग। तो लाइक मेरे पापा भी खेलते हैं, मेरे दादा भी खेलते थे क्रिकेट। सबको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना बिकॉज इट्स अगेन फिजिकली लेस टोलिंग। तो जो सबके साथ एक कम्युनिटी में साथ में रहना आया कि बड़े लोग हैं तो उसमें रिस्पेक्टफुली कैसे कॉम्पिटिटिव बनो। क्योंकि अब क्रिकेट है, स्पोर्ट है, तो कंपटीशन तो आएगा ही। बट उसमें फिर भी रिस्पेक्ट कैसे कैरी किया जाए साथ में। और जो रिस्पेक्ट जैसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने शायद अगेन नॉट स्पेसिफिक टू क्रिकेट बट स्पोर्ट्स में जो एक काफी अच्छी चीज है, जो एक हारने के बाद हाथ मिलाने का कल्चर है। और आई थिंक जितना सिखाता है आपको मतलब एक क्योंकि मतलब बचपन से आई हेट लूजिंग, आई एम अ वेरी सोर लूजर। बट अगेन क्रिकेट में या बैडमिंटन में व्हेन आई यूज्ड टू लूज एंड आई यूज्ड टू आई इट वाज अ पार्ट ऑफ द कल्चर टू गो अप टू देम एंड लाइक शेक हैंड्स विद देम। दैट दैट इज I mean, you've seen. I don't know if you've seen Django Unchained, but उसमें जब वो लियोनार्डो डिकैप्रियो वाला सीन है, and he's like, I want Yeah, you I'm to shake sorry, my hand. It's like, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा भाई। मैं like he literally ends up I'm shoot. sorry I couldn't resist, right? He Yeah, shoots, yeah, and he मतलब shoots हाँ, Leonardo DiCaprio. तो yeah, yeah, वो अब you can't do that in real life, right? तो yeah, वो जो एक कल्चर सीखने मिला, वो जो बार बार करके वो जो एक ह्यूमिलिटी आई कि यार कोई बात नहीं, हारे नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे, want to be on the better side, but आज maybe I wasn't good enough. So वो जो एक सीखने मिला वो एक शायद स्पोर्ट्स में probably one of the biggest learnings in my life। और क्रिकेट में since it's a team sport, मे बी आप कितना ही अच्छा कर लो, आपके टीम वाले अच्छा नहीं करें और you end up on the losing side because of them। एंड अगेन टुमारो यू नीड टू प्ले विद द सेम गाइज एंड वो बहुत सिखाता है। लाइक इट टेल्स यू दैट लाइफ में पहली बात सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। और जो आपके कंट्रोल में होता है उससे सब कुछ नहीं होता। तो yeah, that's true, yeah, या तो इससे फिर एक काफी अच्छा कनेक्ट बना क्रिकेट से, इसीलिए आई लव टीम स्पोर्ट्स। बैडमिंटन से उतना नहीं बन पाया क्योंकि एक जो कम्युनिटी की फीलिंग है। तो अभी आई आई प्ले एनयूएस में क्रिकेट ज्यादातर एंड आई लव द टीम। हमारा जो एक एक अलग ही ग्रुप बना हुआ है। लाइक एनी टाइम वी मीट, एवरी टाइम वी मीट, इट्स जस्ट फन। लाइक आई हैव नेवर सीन अ सिंपल डल कॉन्वर्सेशन। लाइक yeah, एक like there is not a single source of negativity in our conversation, and I think that's the best thing you can achieve as a community or as a group of friends। yeah, वो तो सही है, मतलब मैं भी कुछ सेशन गया हूँ। आई थिंक शिवांग इन द 3 digit सेशंस गया है। मैं इन सिंगल डिजिट गया। तो लाइक देयर इज अ वेरी स्टार्क डिफरेंस, बट मतलब हाँ मजा तो आता है, लाइक स्पोर्ट्स में but तो बहुत both मजा both आता are है। equally sad।
like 3 digits. That doesn't. भाई, शिवांग इज द कैप्टन ऑफ एनईएस क्रिकेट. ठीक है, अपकमिंग कैप्टन है वो. ठीक है, एंड आई तो कांट इवन बैट. तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट. बट या, तो मतलब सही है. या लाइक आई थिंक या सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता. एंड यू ऑल्सो मैंशनड लाइक हाउ रैपो बिल्ड्स इनसाइड ऑफ अ टीम, राइट? लाइक दैट्स अ वेरी, Yeah. हाँ मतलब वो तो है ही. अब वो तो सीखते ही हैं जो. अरे हाथ जो मिलाते हैं हारने के बाद, वो तो मतलब, अरे आज के दुनिया में क्या होता है ना, हारने को बहुत वो कर दिया है. लाइक they don't people don't romanticize with their struggle, or they romanticize too much. Mhm. Yeah. So the thing is, you can't really enjoy what you've achieved if you don't know how to romanticize with your struggle. That's one thing. Because again, like, we are from a third world country, वो हमको पता है कि there are things that we need to do just for our survival, right? That's one thing. I mean, be it just going out and playing with others itself is a big thing for a small kid, right? Mhm. वो एक है. And if you start romanticizing too much, what happens is वो बहुत गलत चीज है, honestly. Like, या मतलब नहीं, अलग बिल्कुल सही तरीके से बात है. अफेक्ट करता है आदमी को. या Yeah, I think like हारना और हारा हुआ होना are two very different things. तुम या हारते रहो, हारते रहो, हारते रहो. You, there is a big chance कि तुम फिर भी हारे हुए ना हो. And तुम जीतते रहो, and there is a big chance कि तुम बस हारे हुए हो. Because या because हारा हुआ होना is something that you carry with yourself. And the day you start carrying that personality with you is the day you can never win. Because even if you win, right, you end up on the losing side, because the losing side is not the one that competitively loses. It's the one that does not grow anymore, that stops their growth for some reason, be their arrogance from winning, or be their self pity from losing, or whatever it is. But हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि हारा हुआ होना और हारने में बहुत फर्क होता है, एंड स्पोर्ट्स आपको काफी क्लियर डिस्टिंक्शन करने में हेल्प करता है. वो तो सही है. हाँ. और कौन से स्पोर्ट्स हैं? लाइक बैडमिंटन तो मेंशन किया. मैं तो मैं थोड़ा टेबल टेनिस खेला था. तो बहुत कम. बट या, शिवांग. तो शिवा इज अ फन स्टोरी. लाइक शिवांग started playing table tennis in university, and he plays better than me. I think sport by right, if you play anything right, it's very transferable. मतलब या, कोई भी वेरी sport खेल ट्रू. सकता. लाइक आई थिंक वो डेक्सटेरिटी होती है, बिल्ड होती है आदमी में. लाइक, और आई मीन आई एम मेंशनिंग आदमी बिकॉज अगेन इट्स आल्सो औरत, राइट? I'm being clear here. So yeah, like, I'm just like saying, as a part of parlance, ठीक है. डेक्सटेरिटी बिल्ड होती है. योर रिफ्लेक्सेस आर गुड. योर आई ट्रैकिंग, और लाइक अंडरस्टैंडिंग और हैंड आई जजमेंट. कोऑर्डिनेशन. या जजमेंट, राइट? या. हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्या मतलब, वो तो है ही. लाइक, या आई थिंक इट हेल्प्स इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ एज वेल. मतलब या, हाँ. बट आई थिंक एक पैशन भी होता है स्पोर्ट्स का, जो आपको अगर खेलते रहो तो अपने आप आ जाता है. लाइक इट्स ऑल्सो लाइक, जैसे for sports, for table tennis, when I used to not play good, I used to not feel good. Like the days I used to be कि मैं नहीं अच्छा खेलता हूँ, it wasn't the fact कि मैं हारा, but it was just the hunger to be better at a sport. Like whatever sport I play, I want to just keep improving, because एक अच्छा लगता है मन में सोचना कि आज एक नया स्पोर्ट सीख के आए, एक नया स्किल ऐड किया, एक कुछ नया सीखा. एंड अगेन एक अभी I'm going to take a name which you're going to probably keep hearing again and again on a podcast is. See, for me, I had a help in learning table tennis, which was a good friend, Hardik. So Yeah, yeah, that's a name that you're gonna one day we will invite him. for Yeah. sure. But for starters, I don't think he was a good introduction to our group. Yeah. But yeah, so is there any sport that you ever thought that you wanna play, or like एक ये sport देख के हमेशा लगता है कि यार खेल नहीं पाते तो, but ऐसा कभी बनना है, like ये sport अच्छा लगता है देखने में और ऐसा player बनना है कभी. मतलब मेरे लिए हाँ. प्लेयर बनना है. अरे बास्केटबॉल एक चीज है जो मैं बिल्कुल नहीं हम्म. खेला. और हाँ. मतलब पता नहीं, मे बी इट्स द पॉप कल्चर एंड द एसोसिएशन विद अ लॉट ऑफ द स्टार्स आउट देयर. बट या मतलब मैंने कभी गेम भी नहीं देखा है, तो आई ऑनेस्टली वांट टू लाइक रियली प्रॉपरली ट्राई बास्केटबॉल आउट. दैट्स वन थिंग दैट आई हैव नॉट डन. बट बाकी, अरे कुछ कुछ नए नए स्पोर्ट्स है लाइक ये
वो क्या चूक बॉल हाँ, चुक कुछ बॉल. लाइक मस्त मस्त चीजें हैं. सो लाइक दैट इज वन गुड थिंग. ऑल्सो शिवांग लाइक्स सॉफ्ट बॉल. लाइक एक्सप्लेन दैट. It's I don't know, like it feels like a discount baseball and a discount cricket. Like It baseball is is already a discount cricket, and then I feel like softball is a discount baseball. So it's kind of triggering to a point where like why does it exist? Because we put in so much effort, and especially in a country like Singapore where cricket is not so famous and softball is more famous, it is kind of triggering. But yeah, I mean, let's not go down that road. We'll have a different, let's save it for a different way. But I think you're very right about basketball. I think I had the same like sport in mind because, okay, honestly, when I like when because of my build, I was always told, you should play basketball, you should play basketball. But the times I have played basketball, I just don't enjoy it that much. It's probably the only sport that I don't enjoy that much. But there is one thing about basketball. Again, I don't know why this is so much in limelight. Maybe because like USA plays it and it's so like popular in pop culture, as you said. But the people that basketball produces, like the greats of the game, their mentality is something that is completely like revolutionizing. Like if you look at Michael Jordan, if you look at uh, Steph Curry, if you look at especially Kobe Bryant, the Mamba mentality, the whole thing. If you look at Shaquille O'Neal, these people, and you compare it to cricket, even cricket, like right, or even okay, tennis produced like Roger Federer. His whole persona was different, but like throughout the so many years of sports, right, if you pick out the most influential sports people, or like sportsmen with absolutely different and revolutionizing thought process, they're mostly basketball players. And even though basketball is a seriously non-contact game, the kind of power that these people used to carry with them was immense. And I don't know if it's the sport, it's the culture, or it's just the fact that it's so popularized, but there's just something about those people that really fascinates me. And like I'm like, maybe it's the sport has to play a big role in it. Yeah, I know. अरे वो था ना. So I think you mentioned previously about not in the podcast. Like you told me about the Mamba mentality. Yeah, Yeah, it exactly. was that video is like so. मतलब ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं. Like हाँ, that. मतलब, yeah, go on, go on. So that was really cool. Like I mean, Kobe Bryant, we all lost a very big legend, right? Like Yeah. yeah, even his interviews, I've seen like a couple of them. The way he explains how much dedication he had to the sport, I think a major part was his hard work that kept him on top. और वो वर्क एथिक, वो डिसिप्लिन, लाइक वो ग्रिट, मतलब बहुत डिफिकल्ट टू मैच है. हाँ, और वो किसी स्पोर्ट में नहीं दिखता है. लाइक मे बी ओके, रोनाल्डो हैज दैट ग्रेट, बट या देयर इज समथिंग अबाउट दीज पीपल दैट रेजोनेट्स यू बियॉन्ड स्पोर्ट. या लाइक जैसे कोबी ब्रायंट का एक बहुत फेमस एक इंसिडेंट है. आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस पहले, बट बेसिकली माइकल जॉर्डन, he used to wear Jordans, and it was the final game of some season or something, I'm not sure, and it was Michael Jordan against Kobe Bryant. And Michael Jordan was an absolute beast in that game. Like he scored like 40 points or 44 points or something. And they were standing near each other like in the final minutes of the game. And Michael Jordan looks up to him and says, "You can wear those shoes, but you can never fill them." And of course, Michael Jordan won that game, and Kobe Bryant was so like not frustrated, but so like okay, motivated, again a wrong word, but like आई थिंक इट टेक द स्विच इन हिम. it, yeah, exactly. Yeah, that's I don't think English can like, or even या Hindi, like होता है ना कुछ सर पे भूत आ गया उसके, like कुछ तो हुआ. हाँ. So he was like and he then started like not he stopped talking to everyone. He used to train day after day after day, and then his own team, like they asked the coach like, what happened, is Kobe mad at us? And the coach told the team like, this happened, and this is the incident, and that's why it's nothing to you, but Kobe is like, वो अभी अपनी दुनिया में है, अभी उससे बात मत करो. So, and the player was like, Acha, when is our next game against Jordan? So coach said it's after 2 weeks, and the players were like, yeah, I feel bad for Jordan because we all know what's gonna happen then. And at the day of the game, right, the coach told the team that, you know what, today I don't think you should even bother
paying attention to the game because I don't think Kobe's gonna pass. And that day, Kobe broke so many records and he absolutely thrashed Jordan's team single-handedly. तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बट जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम का जब रिजल्ट आने वाला होता है, तो ऐसा लगता है कि क्या पता क्या होगा। एक कॉम्पिटिटिव रहता है, एक कंपटीशन रहता है कि यार हमसे भी बेहतर लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर यूज्ड टू से कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू मिस्टर ओलंपिया आई नेवर वेंट टू कॉम्पीट, आई वेंट टू कलेक्ट द ट्रॉफी। तो ये मेंटालिटी कहाँ से आती है? दैट्स ट्रू या वो अरे इट्स ऑल मास्टरी ना। वो लोग उनके फील्ड में दे हैव सॉर्ट ऑफ रीच द पिनेकल। मतलब हाँ, ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस पिनेकल राइट, क्योंकि पास्ट लेजेंड्स हैं। हम्म। और मतलब अब डॉन ब्रैडमैन ही है क्रिकेट में, ही इज हम्म। लाइक अ लेजेंड राइट, लाइक आई मीन दैट इज वन थिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट स्टिल हाउ कैन यू कंपेयर डॉन ब्रैडमैन टू लेट्स से विराट कोहली? इट्स आई थिंक क्रिकेट हैज चेंज ना Yeah, नाउ ऑल्सो। absolutely. या सो Yeah, वो भी है, लाइक हाउ विल आई मीन ऑब्वियसली विराट कोहली इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, लाइक I think undoubtedly. throughout cricket, Yeah. like सारे formats में he's like very good. But yeah, like हाँ, so there's also this very circumstantial position that you have in a sport Mm. कि हाँ उस time पे you are at your best. Mm. And मतलब हाँ, like yeah, I mean Schwarzenegger, who doesn't know Schwarzenegger? Like yeah, he is yeah, like legends, yeah, yeah. Yeah, there's this book that I was reading. I think I told you about it. It's called Tools of Titans. It's by Tim Yeah, Ferriss. I I love was that guy about to so mention. much. उसका फॉरवर्ड श्वार्ज़नेगर ने लिखा है हाँ। हाँ, उसका forward Schwarzenegger ने लिखा है, and there is this small, like, so basically that book is divided into three parts: the healthy, the wealthy, and the wise. And I think uh, counterintuitively, of course, we all know how healthy he is. I mean, there's no doubt about it. But he is actually a part of the wealthy and the wise in that book. He is like health, uska sabko pata hai, but like the wealthiness and the wisdom that he possesses is different. Like uska bahut hi alag hai. And again, there's this something about the American culture, I think, that cultivates such mentality. And maybe, yeah, maybe because basketball is a very engraved part of the American culture that he वहां से ऐसे निकलते हैं. I'm not saying it's just America. I'm not saying America has to do something about it. But कुछ तो है American culture में, और America जैसे breed करता है इन लोगों को कि ऐसे लोग bloom कर पाते हैं, blossom कर पाते हैं. And बाकी, like especially in Asia and especially in like the two countries that we've been in, India and Singapore, there is some sort of that nipping in the bud, some form of कि अपने लोग वो एक ढक्कन लगा देते हैं और उसको निकलने नहीं देते बॉटल से. तो एक वो आई थिंक वो चीज. ढक्कन भी कंप्लीटली नहीं लगा है, वो ऐसा हल्का है जिसमें आप हाँ. बॉटल भी घुमा दो पानी नहीं निकलेगा, और एटलीस्ट ड्रॉप ड्रॉप निकलेगा, वैसा है। और हाँ, और इतना है कि आपको बाहर की हवा अंदर आ सकती. तो लाइक हाँ, यू आर एम्बिशियस, यू आर अलाउड टू बी यू एम्बिशियस. नो व्हाट इज आउट देयर। Exactly, you know what is out there, but you're not allowed to take a taste of it. Or like अरे it's like the amuse bouche of of ambition. You're given the amuse bouche of ambition, but you're not allowed to take a main course of it. अरे तो अरे तू बियर है। हाँ, दैट्स द एग्जैक्टली. बॉटल से अगर तेरे को गिलास में जाना है तो तेरे को बॉटल से निकलना पड़ेगा. बट अगर बॉटल का तुम ढक्कन बंद रखोगे तो कितना ही डाल लो नहीं निकाल पाओगे ना, नहीं वो जाएगा. और वो ढक्कन सोसाइटी के हाथ में है हमारे. वो एक वो तो काफी. या ट्रू। या तो या that's अरे something तो that. लाइक द डिस्टिंक्शन एक्चुअली इज यूएस इज अ इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी, एशियन कल्चर इज कलेक्टिविस्ट, like we function in collections by right. Yeah, for sure. No matter how finely you grain it, उधर 10-15 लोग रहेंगे क्योंकि हाँ. इतना भीड़ है। तो वो तो है ही, बट लाइक यूएस में हाँ इंडिविजुअल चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है, एंड it's you who did it, not the team, is what USA talks about. So हाँ, like that's the main I think cultural difference. और also यूएस का तो एक कोर वैल्यू ही फ्रीडम है ना, मतलब उनका तो वही मेन चीज है। आई एम नॉट सेइंग अदर कंट्रीज आर नॉट फ्री, आई एम सेइंग यूएस का जो वर्क कल्चर है,
like everything is like freedom first, human first, freedom first ऐसा type का. तो हाँ मतलब वही है. So yeah, that's good. Like, अरे, Yeah. so you talked about Arnold Schwarzenegger being in Wealthy and Wise, right? We all know he's like what? I think he's a Senate member or something. No, Oh, he was a he's in governor of California. He was a governor of California. Governor of California. I'm Yeah. sorry. So Governor of California. But so so Shaquille O'Neal, interestingly, he is a very big businessman himself. Yeah. ठीक है. Yeah. So I'll tell you the list of businesses or franchisees he has. ठीक है. Okay. मतलब he partially owns like stake in a lot of these companies Yeah. and Yeah. also Yeah. stores around as well in some of them. So Big Chicken. So apparently this is like a store. Papa Okay. John's, Okay. Yeah. We all Beachbody, know Papa John's. Beachbody I think is a apparel store. Forever 21, everyone knows. Okay. JC, Elvis Presley, The General, Marilyn Monroe, Reebok. So all of this he owns stakes in. He's an investor in Apple, Google, Pepsi, Lyft, the car company. Like, The and then he has LYFT one, right? yeah, Yeah. LYFT, Yeah. ride hailing, and Hmm. he also has franchises in USA of Krispy Kreme donuts, Five Guys, 24-hour Fitness, Auntie Annie's Pretzels, Cityplex 12 movie theater, and Shakil, which is his own restaurant. So, like, Okay. I have a question here for you. How much of this do you think he did because he was just bored? right, a majority, Yeah. or his financial advisor would have been like, हाँ मतलब कुछ खरीदते हैं क्योंकि आपके पास सर बहुत पैसा है. हाँ मतलब अब क्या करोगे इसका तो कहीं इन्वेस्ट ही कर दो अब नीचे जाएगा तो दिक्कत नहीं है ऊपर जाएगा तो और आ जाएगा फिर और करेंगे इन्वेस्ट अरे एक ऐसे नॉर्मल से लाइक इंटरव्यू में ही इज स्टैंडिंग इन अ मॉल, पीछे जेसी पहनी है, ठीक है. और ऐसे वो कोई तो इंटरव्यू कुछ तो पूछता है and he's like he I think that's one of the places where he mentions ki yeah I own a part of that, like, company. Like, and also in one of the interviews, right, like very good, Shaquille O'Neal का एक बहुत मेजर फिलोसफी है कि मेरी मम्मी को कुछ भी चाहिए मैं खरीद के दूंगा. Hmm. That's it. Like, it stops there. Yeah. Like, if she asks me for anything, then I'll buy it. No, nothing else matters. So I think he also works for that, apparently. Like, his mental, like, what do you say, his mental state is that. So matlab, हाँ. हाँ Like, और yeah. मतलब जैसे I Hmm. don't know some people think it's arrogant or whatever but जैसे you said कि Shaquille O'Neal was standing outside JC Penney and he said कि yeah I own the तो He यार मेरे को pointed, काफी but yeah, like he yeah, said that. I get it but like I love these kind of like when these humble people finally have that slight bit of cockiness which they deserve after like so much hard work like there's Yeah. this amazing interview of Roger Federer where he's Oh telling yeah. how he wasn't allowed in Wimbledon and he's like Like, Roger not allowed to in go to Wimbledon Wimbledon. exactly and then he's just telling like this guard is like you need to be a member to enter Wimbledon. He's like yeah I am a member, can you please let me in? And she's like do you have your membership card? He's like I don't have it but like I am a member, like how can you not know this? And he obviously did not say this but like she's not letting him enter, so he does not have a choice and he's like I have won this competition 8 times, can you please let me enter? And okay I know okay Roger Federer is like a lifelong idol for me, the most humble person ever, but that slight bit of cockiness and it's not a lack of humility, it's just a final embracing of that you have achieved. I Yeah. mean no matter how much you be modest about like okay I have a far way to go, Djokovic is better than me in terms of numbers, whatever, Roger Federer is the guy who revolutionized the game, and that slight acceptance after doing so much that I'm good is also I think needed while you're being humble so that it allows you to like appreciate yourself. So yeah, Yeah. that's just I love when when people Yeah, do yeah. that. So he mentions, so the story, I mean, I briefly remember, he mentions, he tells a friend, okay, I got this. We are at Wimbledon, I got this. He goes to the security personnel, and then she's like, I'm sorry, I can't let you enter without a card. He's like, I come to this place every year, but I enter from a different entry point. Yeah, because I'm This is the playing. first time I'm coming from here. Yeah, yeah, yeah. Like, It's it's, it's yes,
a hard time explaining ki, yeah. It's like he owns Wimbledon probably the way like we would be in our house. I mean honestly Yeah. अगर मैं अपनी मम्मी को ऐसे बोलूंगा ना कि मम्मी मेरे को घर आना है तो मेरी मम्मी भी मेरे से इतने सवाल तो पूछेंगी कि क्यों मतलब अभी अभी ऐसे क्या हुआ अभी क्यों आ रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट तो उतना उसका है हक मेरे ख्याल है विंबलडन पे हाँ वो तो है या बट हाँ या so yeah like that was good sports and also like a few things here and there but yeah so I wanted to talk about core human emotions तो ओके मतलब things that drive us and I think the four fundamentals I mean you should visit our website we need to talk dot site we'll have it in the description as well so the main I mean it was a very like I like to think of situations or in a very in a pro-human and a like a human emotion manner because I think emotions are something that drive us 20% effort which is like proper objective effort and 80% emotions I think that's pretty much about it right so and we've mentioned like four fundamentals which like are there were very good descriptions as well which written by me and Shivang but yeah like there are like four of them happiness fear love and self-actualization like you should read about them so I was thinking so मैं recently कुछ movies देखा ठीक है और अच्छी movies like oh I that's revisited them that's uh, obviously that's important no like अच्छी movies ऐसा like अच्छी movies because I mean we're at the topic of emotions right so do yeah you know this person called Pete Doctor uh, doesn't ring a अच्छा bell ठीक है now तो Pete Doctor is the guy who directed three movies which I believe like are the best. ठीक है, Up, okay Inside Out. okay okay Okay, this man is the one who emphasizes emotion over everything. yeah To the point भाई इसके movies देखो मतलब I think you've seen all of them yeah yeah obviously. Like मतलब उसमें आपको आपको लगता ही नहीं है कि वो एक ऐसा एनिमेटेड फिल्म है. It's so true. And you so what happens is Disney everyone feels कि एनिमेशन है पिक्सार है मतलब आप खिलौना दिखा रहे हो वो तो है ही नहीं बिल्कुल पहली बात इट इज सो प्योर मतलब मैं अब देखा एंड आपका लाइक ओ माय गॉड दैट मूवी इज रियली गुड ठीक है it actually won Oscars, right? But yeah, even Soul actually, Shivang made me watch it. Soul was like, oh my god, like those things. And Inside Out, everyone knows. He also boils them down to emotions like joy, oh yeah anger, like yeah, like so brilliantly mentioned. Like I think we need to emphasize on the idea that like human emotions, if we understand them correctly, right, we'll be able to know a lot about ourselves as well, right? तो मतलब yeah या लाइक हाँ मतलब वो होता है ना पाक पाक फीलिंग्स लाइक इट्स सो प्योर yeah लाइक हाँ मतलब वो एक रॉ इमोशन रहता है एंड देन या लाइक दैट I दैट वाज think समथिंग दैट वाज या one of the most brilliant things about one of the movies that you mentioned, Inside Out, was towards the end, right? When they're trying to make those core memories come back, if you remember, या it's the fact that when they convert those memories into sad memories, that या they become core. And that was like, while I'm saying this, it's giving me goosebumps. But there is this something about a human mind that no matter how happy that you've been, if there is some moment that has given you extreme happiness, if there is a moment that has given you like that has shook you to your core, right? For some reason that is going to be the driver of your like mental image and like how you perceive life, like no matter how good, like how much good has happened to you in life, that one core sad memory can absolutely mold your personality into something completely different for the good or bad. because it cascades na in the movie it is Huh, shown that how memories are collapsing right huh, in a way right they show it how things are falling down inside. yeah, It's like crazy, like the way they've shown it, and it's a very good lesson on mental health as well. Like, oh yeah, mental health, right? Like kids these days, especially like even in teenage and stuff, right? We are so much pressurized because of this information
thing that we are overwhelmed with. Like internet itself, right? It's so overwhelming. Ki, matlab, हाँ, and even social media, right? You look at other people and you sort of get overwhelmed. I mean, Of uh, course. like वो तो है ही, and Look, everyone's my doing. life is cooler than your social media. Yeah, look, my life is cooler than yours. Honestly, it's not. It's not. And humans are such a strange tribe. ठीक है, एक बहुत बढ़िया चीज है कि when you take a it's pure statistics. ठीक है, when you take a bunch of people, you talk about their problems at a personal level, you talk to everyone individually, you realize that everyone thinks their problems are unique. Oh, that's And for the person, and for the person who's conducting the interview, thinks all the problems are same. Because yes, they are. like yeah. like टोटल that's मिला के आदमी की, हाँ, हाँ गुड हाँ, गुड। क्या मेंशन। आई वाज जस्ट सेइंग टोटल मिला के आदमी की 5 या 7 प्रॉब्लम है। उन्हीं हाँ के लाइक, ओके, उन्हीं को ऐसे मिला मिला के धागे लगा लगा के हम लोग उसको बोलते हैं नया है। हाँ। एंड वो 5 फंडामेंटल या 7 फंडामेंटल प्रॉब्लम के अलावा आदमी के पास कुछ नहीं है। क्योंकि हम्म, उसके पास, अच्छा, अगर आप ऐसे फंडामेंटली देखो तो आदमी के पास है क्या? एक उसकी हेल्थ, ठीक है, एक उसके आसपास चाहने वाले सोशल सर्कल विच इंक्लूड्स फैमिली, एक उसका फाइनेंशियल सिचुएशन, या ठीक है, और एक उसका मेंटल हेल्थ, इमोशंस एंड हाउ ही इज डूइंग इमोशनली। ये हाँ, 4 आदमी के ये मेन कुछ ड्राइवर और है। डिराइव्ड होंगे बट हाँ हाँ, लाइक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सोशल, या ठीक है, ये 4 और फाइनेंशियल 5, ये हाँ हाँ 5 आपकी दुनिया बनाते हैं। अब हाँ। इन 5 में तुम प्रॉब्लम बना बना के बोल रहे हो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम पुरानी है, अरे भैया। लाइक प्रॉब्लम पुरानी नहीं है, अरे क्या होता है ना, सो द थिंग इज कैपिटलिज्म हैज एक्सेलरेटेड आवर लाइफ सो मच कि वी हैव बीन थ्रू टू मच ट्रायल एंड एरर, एंड ऑल्सो इट हैज ब्रॉट अप सो मेनी सिचुएशंस कि हमको लगता है हाँ नया है, मैं कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स एक्चुअली द सेम. Like everyone around you is going through the same problems. Okay, Yeah. honestly, they might be at a different scale as or at a different stage or a scale as compared to you, but honestly, everyone is going to face the core problems that Yeah. humans have to face, right? तो वो एक चीज है like मतलब हाँ like again you understand these things from like an emotional perspective. मतलब I'm surprised how movies can teach you a lot about this. Like Oh, yeah, like like so good. Like there are some very good movies. मतलब हाँ, we'll do a binge list episode also. Like we'll do like Goodwill Hunting is one of the movies that teaches yeah, you a lot good about one. emotions Yeah, and how being yeah, smart and being mature are two very different things. yeah, like But for, okay, one movie that, again, Soul is like oh yeah, Soul. the problems that it's a child, it's like an unborn child, basically, like the spirit of the child basically completely uh, transforming the way a grown man is thinking, and vice versa. And again, like, that movie is one of my happiest memories in university, all because, like, so if I think about that and everything that movie is for me, that movie, other than that movie, the experience of that movie, everything, the situation that I was that movie in and everything. I remember it was raining. I had beautiful company. Uh, I was. It was a beautiful day. Singapore. It was probably our second year. We finally were like, or first year. I don't know, but I remember we were finally feeling settled in Singapore. And when I watched that movie, I was like, this is something that was missing in my life. Like, it was going all fine, but I needed someone to tell me that it's the small things, and it's the tiny things. It's not always about achievements. If you think that whole movie, like, it's the tiny appreciations of life that makes it life. If it makes sense. Yeah, Yeah. like yeah. So in the movie, right, in the end, he talks about that. So he is given an extra chance in life. Yeah. That's so good. Like so, he's given extra chance, and then the I think spirit. I'm not sure. I don't remember the exact like name of or the persona, but basically the teachers who actually teach children or like who are like before uh, bringing them to earth, they teach about different activities Yeah. to find their interest, right? To find their Yeah. personality. Yeah. To find a personality. So she asks the jazz musician, right? I don't remember the names, right? She asks him, "What will you do with your life now?" He's like, "I don't know, but I'm going to
live the fullest. Like I'm going to Uh, experience every moment of it. That thing is really good. so Like, exactly, yeah, when I was like watching the movie, right, I realized that I am living my life to the fullest, but I'm just not appreciating that fact. yeah. Because You should I still remember experience. that so clearly. Like I was sitting in the cinema hall and I was watching it and I was like, could I ask for anything more? Like I have everything right now. And I just need to enjoy it more. The Yeah, only thing, and it's not that I'm lacking appreciation, honestly. I have complete appreciation of it. I just don't have an enjoyment of it for I don't know what reason. yeah, yeah. Like these are so Pete Doctor, like same guy. He's done brilliant stuff. He's also done Monsters Incorporation, by the Oh way. my But god. Okay. hey, yeah, like Uh very good movies. Yeah, yeah. So yeah, I think he worked on Wall-E and stuff as well. Like he's done proper like really good movies. my respect for But that dude is going above something I can fathom at the moment. yeah, yeah. So one more movie which I don't think Pete Doctor has worked on, which is equally inspiring, equally what do you say, moving. At least like I think for both of us because we watched it together is Coco. Coco is my god, like it is so good. Like it is so good. It's not even about family or it's not even about how can you fathom the thought of showing skeletons on like a 2.5 hour screenplay or like 2 hour screenplay and do it so beautifully that you're teaching so much, And for right? children, skeletons for For children. children. Yeah, skeletons for children. Like you can't even imagine. The child, Miguel, is cursed. Yeah. He goes to the what do you say, the spirit place and it's The so more, colorful. more, yeah, One yeah. thing colorful, भाई. It's so colorful. मतलब वो ऐसे बहुत अच्छा था. Yeah. I meet so many people that again, when we watch Coco, one of the good days. But Yeah, yeah. when I talk to people about Coco, their thought process like it's good, but not really a good Pixar movie. Like if you compare it to them, I'm like, you're missing the when people look at movies like this, right? Uh, like Coco, they you see the story, you break down the parts, you see the story, you see the acting. Again, not for animated movies, but like you see the acting, you see the music, you see, The yeah, character arc, the yeah, character arc exactly. is good. Yeah, What you fail to see and what many people fail to see is the emotion it inculcates in you. yeah, Like why, so I was reading this book which was telling me how why paintings are expensive, and basically it was like the range of emotions it can take you through. And yeah, for me, right, Coco is one of those movies which takes me through so many emotions, and not one of them is negative, yeah. which is, I believe, is a Herculean task for any director. Like, I Yeah. mean, my favorite director is Christopher Nolan, and all he does is take you through negative emotions. I mean, Not negative. I think cerebral, confusing emotions. yeah, Yeah, but there not is a even lot of, negative. yeah, and this movie so simple and does the extreme opposite in an equally brilliant and brave way. Yeah, Yeah, his it's actual, amazing. like his actual great grandfather. So when he first mentions they're in a well or something of a situation where Yeah, yeah. uh, I think De La Cruz he just like pushes them into a well or something, Yes. and he talks to him. He like Hector, he's talking to yeah. Hector. Miguel and Yeah, Hector are talking. Hector. Yeah, Hector is talking, Yeah. and Hector tells Coco, like my Coco, I am not able to see her, and his that thing, like it's so good. Just by, I mean, yeah, if you get time, please watch all these movies. Like Disney's movies are really good. Pixar, Disney, their works is so good. I mean, I'm not saying DreamWorks is not good. I'm not saying other stuff is not good, but DreamWorks has also done fantastic work. Oh, How to Train a Kung Fu Dragon, Panda. Turbo, yeah, Kung Fu Panda, man, come on, like those are like great works. But yeah, so all these movies are like so I think animated movies teach you emotional stuff a lot better than like I think it's the experimentation advantage that you have. Like you have more liberties to work with because again, you can't show skeletons in real life, right? It works only in an animated movie. Yeah, so मतलब वो अच्छा लगा मेरे को, like, animated and these stuff. I mean, Toy Story, man, come on, Toy Story is good. Toy Story, like there are some parts in the Toy Story 3 वगैरह थोड़ा मतलब थोड़ा वो लोग off track type चले गए थे, but and it was more about like adventure and stuff. And Toy Story was like
very pioneering the animated scene, right? Even Cars. Cars is such a good movie. The first one, Yeah, like the first one, only the first one. only the second one was oh no, वो तो मतलब हाँ all in oil वगैरह and you know you started like loving Tomater and liking No. McQueen. दो and third one तो मतलब अलग ही गाड़ियां आ रही हैं हाँ, अलग ही third, चीज I think third wali was a very good interpretation of current, like the current scenario of दुनिया. yeah टेक्नोलॉजी घुसाओ, कहीं भी घुसाओ, कहीं भी घुसाओ, उम्मीद करो कि अच्छा बनेगा और निकाल दो, और दुनिया देखेगी उसको क्योंकि उनको उम्मीद है और आधी दुनिया अप्रिशिएट भी करेगी क्योंकि उनको लग रहा है कि हम लोग इससे कूल बनेंगे. So there are many people who I find like I'll be like, how do you like Cars 3? They're like, it's amazing. I'm like, why? It's like it talks about sustainability. I'm like, how? oh I'm like, how? And I'm sorry, I might be very wrong about this, but Cars 3 is a movie which I really feel is like, उन्होंने आज का टॉपिक उठाया, उन्होंने एक फेमस मूवी उठाई और उन्होंने दोनों को मिला दिया. एंड इट्स अ प्रॉपर, आई थिंक इफ इट वुड हैव बीन अ बॉलीवुड मूवी, आई वुड हैव बीन लाइक, हाँ, फिटिंग है. आज के दिन ऐसी अरे मूवी तो बन रही है बॉलीवुड. in Cars 2, right? He basically all in oil. They sell it as something that is sustainable, Yeah, but yeah, yeah, yeah. it is the engine oil that's causing them to use this some technology from far distance, वो and then हाँ, जो रेडिएशन वाला वाइब्रेशन रहता like है. मतलब कुछ वो भी तो सही. बस मेरे को टोमेटर बहुत पसंद है क्योंकि ही इज लाइक अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय टोमेटर इज लाइक हाँ मतलब मेरे को करना है तो मैं करके रहेगा वो बहुत, वैसे type। यार, वैसा ना एक दोस्त होना चाहिए सबके पास. हाँ वैसा टोमेटर जैसे, वैसा उस टाइप का ना एक दोस्त सबके पास होना चाहिए जो मतलब एकदम काफी फ्लैट हो, लाइक जिसकी ना मतलब, जैसे एक वही है. अब उस जैसे पिक्चर्स में मंडल रहता है ना, हाँ, अनोइंग हाँ रहता है. वो हम्म, तो अनोइंग रहता है, सही बात है. बट यार, दिल बहुत साफ रहता है उनका. मतलब हाँ तुम्हें कभी सोचना नहीं पड़ेगा 2 बार कि यार ऐसा कभी तो नहीं होगा ना कि ये मेरे ट्रॉमास या मेरी हैप्पीनेस को मेरे अगेंस्ट यूज कर रहा है. तो वो एक जो मेटर का एक लाइक क्रिएट किया हुआ है उन्होंने, वो बहुत लाइक सबको ऑन, आई थिंक, सबकॉन्शियस लेवल टच करता है कि यार, you might find him annoying or whatever, but in the end of the day, the warmth that the character brings is something that yeah. everyone loves. Yeah. Tomater is like, yeah. So Cars, fun fact, it was like one of the first movies that I tried to torrent. Oh, This is back okay. in India. Like when we used to have the BSNL digital subscriber line, तो उसके लिए क्या टेलीफोन रखो फिर ही तुम्हारा इंटरनेट आएगा. It was basically there was a modem which actually used to provide internet. सेम वायर पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एक इंटरनेट चल रहा है एक टेलीफोन चल रहा है. अभी भी होता है. अभी अभी नहीं होता अभी भी अभी होता निकाल है. अभी नहीं, नहीं होता है. अभी डीएसएल लाइन यूज नहीं करते हैं अभी बीएसएनएल का अलग फाइबर आता है अभी है अच्छा. लेकिन वो बोलते हैं हाँ. कि हाँ टेलीफोन खरीदो तभी तुमको इंटरनेट देंगे ऐसा कुछ है स्कीम बट फाइबर आता है ओके, ओके. डीएसएल अभी फास्ट कर दिया है वो तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ 100 kbps 100 kbps लाइक मतलब मैं कहता था ऐसे रात को रखो टॉरेंट मतलब वो सीट सॉरी टॉरेंट डाउनलोड करके एंड देन यू कीप इट लाइक अ सर्विस बिट टॉरेंट या यू टॉरेंट एंड देन वो अगले दिन सुबह चेक करो कि डाउनलोड हुआ है कि नहीं लाइक मेरे हाँ, लिए 720p वाज लाइक अ वेरी बिग थिंग बैक हाँ, देन मतलब मैंने, या लाइक, there was a world before Netflix where you wanted to watch movies. या एंड देर लाइक वॉज लाइक, जब जब म्यूजिक के लिए हमारे पास ये नहीं होता था, एप्पल म्यूजिक या स्पॉटिफाई, एंड वी यूज्ड टू हैव सॉन्ग्स पीके. तो या सॉन्ग वैसा स्पीकिंग सो फेमस या तो हमें उसका म्यूजिक का भी एक ऑल्टरनेटिव, या मूवीज का भी एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था. बिकॉज कॉमेडी सेंट्रल वाज अ वेरी गुड लाइक या चैनल, लाइक बट वैसे चैनल लाइक हिंदी मूवीज वगैरह के लिए नहीं होते थे. एंड वो सूर्यवंशम देख देखते काफी थक गया था मैं. तो इवन अरे सॉन्ग स्पीके में 192 kbps 320 kbps ये हाँ, सबको याद रहेगा या लाइक मतलब देर वाज, रेट होता था बट हाँ उसमें एक जो था उस समय, क्योंकि अब नहीं थी स्क्रीन, मेरे पास आईपॉड शफल होता था, तो उसमें अच्छा स्क्रीन नहीं होती थी. तो लाइक, इफ यू वांटेड टू लिसन टू अ पर्टिकुलर सॉन्ग, यू हैड टू गो थ्रू ऑल सॉन्ग्स एंड फाइंड दैट वन. तो उस समय या के जो स्किल्स मिलते थे ना, लाइक द स्किल दैट आई हैड, कि मतलब गाना, 2 सेकंड गाना प्ले होता था, आई यूज टू नो दैट दिस इज नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर. सो अरे हाँ वो, इवन ऑन रेडियो यू नो दैट राइट रेडियो या, में तुम करते रहते हो हाँ, यू नीड टू ट्यून, हम बार बार जाते रहते कि नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं. सो yeah, that's something that was pretty nice, but I mean, we are like, I think we are pretty old. Not old, man. The technology is so fast that we are feeling old. yeah, I mean,
I am the youngest in my group here in Paris, and I'm probably the youngest in like NUS in my year. बट हम लोग अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, बट ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब की बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे। अब वही DSL लाइन पुराना हो गया बाय द वे मतलब भाई, तो परसों ही तो था मतलब, हाँ सही है। But yeah, on या the topic of emotions, I think my favorite Pixar movie, like you mentioned some, but my favorite Pixar movie that I think emotion wise was the most beautiful Pixar movie ever was Lion King. ओ लायन किंग, माय गॉड, लायन किंग इज, Uh, या uh, Elton John, I totally get why you're a legend. या Uh, yeah, it's probably one of my favorite Pixar movies, probably one of my favorite movies, but the emotions it takes you through with those simple characters, those simple childish characters like Timon and Pumbaa, and या the things that it teaches you about life, like it means no worries for the rest of your day. And on the contrary, there's this when the song like I just can't wait to be king, and the या irony is this: as soon as he becomes the king, he runs away. या So it's such a reflection of life. Like, you know, when you're, I mean, I remember when I used to be back home, I used to be like, when will I get the freedom? And like जैसे ही सिंगापुर आए लगा भाई कहाँ आ गए हैं, and like अब पेरिस में आ गए तो और ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है तो लग रहा है भाई वापस चले. It's a it's a beautiful representation of how human psyche, and it's again सबको लगता होगा कि उसकी खुद की प्रॉब्लम है, बट भाई सबकी प्रॉब्लम है हाँ कि हाँ पहले मन करता है कि फ्रीडम मिले, जब फ्रीडम मिल जाता है तो लगता है कि अब इसका क्या करें. Like how हाँ, do you, it's like too much power for you. या लाइक वो ओवरवेल्म, मेरे को लगता है ना, वो डिस्कम्फर्ट इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। हाँ, of लाइक course. एक तो उस डिस्कम्फर्ट से पता चलता है कि आप हाँ स्टेट चेंज कर रहे हो, इट्स एन इंडिकेशन। द सेकंड थिंग इज, आप उसके थ्रू जब नेविगेट करना सीखते हो ना, यू ग्रो अ लॉट, यू ग्रो Mhm. अ लॉट। लाइक वो Of course. डिस्कम्फर्ट में नेविगेट, ब्रो, ग्रोथ ओनली हैपेंस इन chaos। ठीक है, ग्रोथ ओनली हैपेंस इन chaos। आई थिंक दिस इज मेंशन्ड बाय जॉर्डन पीटरसन। ही मेंशन्स की ग्रोथ ओनली हैपेंस इन chaos, व्हिच इज लाइक वेरी ट्रू। ठीक है, तो इफ यू आर कंफर्टेबल, राइट, ऑब्वियसली आप कंफर्ट जोन में एंड यू नॉट इवन ग्रोइंग। बट या लाइक, अरे वो उस मूवी में लाइक देयर इज आल्सो अ वेरी गुड रीमेक इन 2017, एनिमेशन इज लाइक सिक। Oh, yeah. Beautiful. बट द ओरिजिनल वन, Oh, the 1984 one. Ah, I mean, ओरिजिनल okay, वन you put so much more money, you put so much more thought, but no, you can't beat it. या लाइक द स्टोरी इटसेल्फ, ही मतलब वो लाइक, एंड ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग द लाइट टचेस इज आवर Oh, किंगडम, yeah. सिम्बा, लाइक The वाओ। song, the circle of life, and the या द whole सर्कल ऑफ the. लाइफ। But as you या said, like growth only happens in chaos. There's a very good uh, talk by Naval Ravikant. He's like, where he talks about like why he started a startup. So someone asked him like, you know, तुम कैसे आए startup की दुनिया में? So he's like, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को सब लोग बोलते थे, तो मैंने बोला था कि मेरे को स्टार्टअप करना है और मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा. तो रोज मेरे से लोग आके पूछते थे कि क्या हुआ, बन गया स्टार्टअप, बन गया. तो ही इज लाइक, मेरे को इतना एम्बेरस कर दिया था उन्होंने. आई वाज एम्बेरस्ड इनटू ओपनिंग अ स्टार्टअप. लाइक कि मेरे को रोज आके लोग बोलेंगे कि बन गया, तो मेरे को एक दिन तो इनको बोलना है कि हाँ भाई बन गया ताकि ये लोग मेरे को छोड़ दें. सो आई मीन, it's your own chaos that you create, and to escape that chaos, right, you grow. It's like तुम्हारे वो 5 प्रॉब्लम है तुम्हारे दिमाग में, बट बिकॉज यू कीप जंपिंग फ्रॉम वन टू द अदर, राइट, it creates 1,000 threads in you, and it feels like you have 1,000 problems. और फिर उसको untangle करना is growth, and उसको untangle करना like is a You won't be beautiful. completely, you won't completely untangle them, obviously. Of course not. You will make sense out of that. You will make Yeah. sense of that, yeah. Like um untangle करना मतलब people are assume, मतलब people usually assume कि it's such a big task in front of me that नहीं, उससे better है कि मैं side में बैठ जाऊं। नहीं, वैसे नहीं होता है। It's not even that. Like वो, अरे वो ये ना, like I think एक stone cutter का example होता है where अब इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो कैसे तोड़ेंगे उसको, क्योंकि हमारे पास तो मतलब नो मैटर, लाइक वी हैव tools really नहीं है. crazy water jets and stuff, like हाँ. heavy pressure which can break through any metal, सब है। बट आइडियली क्या होता है ना, आप धीरे धीरे तोड़ते हो, धीरे धीरे तोड़ते हो, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज इट गेट्स सेपरेटेड। हाँ. It was not the final blow which actually separated it, but it was Yeah. actually this whole event, or it's this whole effort that went through
कि हाँ मतलब देखो इतना किए हैं तब जाके टूटा है। हाँ, ऑफ ऐसा नहीं कोर्स। कि एक बार तोड़ा, जो हम लोग ऐसा हम लोग देखते हैं, हाँ एक बार तोड़ा, ये तोड़ दिया, हाँ ही इज अ ग्रेट गाय, खत्म, इट्स एन ओवरनाइट थिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लाइक इवन इफ इट्स अ बिग टास्क, यू मेक सेंस आउट ऑफ इट, यू गेट थ्रू इट, you go through the chaos, and then yeah, you're bringing your best self out. आई थिंक या बेस्ट सेल्फ का मतलब ये भी होता है कि आप सिर्फ आपके पिछले पास्ट सेल्फ से कंपेयर करते हो, किसी और से भी नहीं। एंड या लाइक इफ यूर जस्ट मतलब हाँ मतलब वो तो है, वो तो है ही, लाइक यू हैव या टू डू। bringing your best self doesn't mean कि you bring out the best idea of you or the best possibility of you. It नो is दैट the इज best जस्ट version हॉट। of you that presents, that exists. It's या not जैसे कि मैं अगर बोलूं कि I want to present the best version of myself. It's not a version of me that has six pack abs. It's not a version of me that is completely intellectual. Of course, it is a possibility, but it's not the version of me that exists. The best version of me is me collected, is me gathering all the knowledge that I actually possess and presenting it in the best way or whatever the situation wants, and just being व्हाट in यू my आर own टुडे frame of mind. ऑनेस्टली, लाइक व्हाट Exactly. यू आर टुडे, या लाइक And just आप collecting your whole personality. फैलना नहीं हर जगह से. हाँ हाँ वो तो है, मतलब वो तो है। अरे बहुत लोग ना सेल्फ अवेयर भी नहीं होते हैं। तो मतलब बहुत लोग का सेल्फ, नंबर बहुत ज्यादा है. अब और बहुत काफी इजी है जज करना। इवन तुम जो सेल्फ अवेयर नहीं है ना, उसको भी बोलो कि हाँ ये सेल्फ अवेयर है कि नहीं, इसको पॉइंट करो, वो बताएगा कि हाँ ये सेल्फ अवेयर नहीं है, एंड ही विल हाँ. बी राइट। बट द अरे प्रॉब्लम लोगों इज, को पता है मैं सेल्फ अवेयर नहीं हूँ. लोगों को खुद हाँ बहुत लोगों को पता रहता है एंड दे आर हैप्पी विद इट. लाइक सो देर आर, एक होते हैं जो सेल्फ अवेयर नहीं होते. एक होते, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल. एक होता है जो सेल्फ अवेयर नहीं होते. एक होता है जो डिलूजिव हो जाते हैं, इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते. और एक होता है जो सेल्फ अवेयर नहीं होते, उनको पता है तो और होना नहीं इसीलिए चाहते। दे इम्पोज some stories onto them which makes them think that what they are thinking is actually true. Like there are so many people I like talk to, they're like कि उनको ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं बिकॉज दे कीप टेलिंग देमसेल्फ दैट स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन व्हिच इज नॉट ट्रू. लेट्स से लाइक, एंड इट्स गोना बी लाइक कि वो अपने आप में इतना इम्पोज कर लिए हैं वो सेम स्टोरी, दैट लाइज दैट दे कीप जंपिंग इनटू, दैट इट बिकम्स द ट्रूथ. वो तो भाई दैट्स वेरी, इट्स अ वेरी विशियस साइकिल ऑनेस्टली। ऑफ तब कोर्स. तो फिर कुछ भी, इफ यू जस्ट गेट अ इंक्लिंग ऑफ थॉट, देन यू विल बी लाइक हाँ यही हो रहा है मेरे साथ। हाँ तब तो मतलब फिर तुम्हारा इतना फ्रेजाइल हो जाता है थॉट प्रोसेस, तुम इतने वल्नरेबल हो जाते हो अपने थॉट्स के लिए कि योर थॉट्स ड्राइव यू इंस्टेड यू ड्राइविंग योर थॉट्स. yeah, like that's a very again, like bringing to the emotion perspective, that's when like a proper emotional distortion happens, right? Like uh, आप फिर छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी इमोशंस को, यू कांट रियली अप्रिशिएट। अब yeah, it's a very this thing, but yeah, like we can actually go on like talking about this, but yeah, like that was it। मैं तो मतलब यही बोलना चाहता था इमोशंस के बारे में। uh, are there any other things that you want to mention? So yeah, we wow, that was like we were talked about sports and then we went to emotions, but it's fine. And we touched Jordan Peterson and movies in the middle. It's Yeah, yeah, like yeah, good stuff. So yeah, और कुछ है? no, but just while you were on the topic of emotions, the last thing that I want to say was recently I just started reading about this different kind of philosophy which is called Stoicism, and there is this very good book called Meditations on Stoicism. It's written by some this Roman emperor. I think his name is Argelius. Not sure. It's a मार्कस collection. ऑरेलियस, मार्कस Aurelius, ऑरेलियस। yeah, yeah, yeah. It's from 160 AD. So उसमें चार फंडामेंटल्स हैं आदमी के. उसमें one is wisdom, one is justice, one is freedom, and one is courage. So I think अगर आदमी को ये चार चीजों का रियलाइजेशन हो जाए कि ये क्या है. मैं I'm not even talking about him achieving them, but first getting the true sense of what these things are, and a pursuit of these things is what you call happiness. या ट्रू, या Like ट्रू, uh, या एक वही है उसमें बहुत अच्छी बात है एक सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में कि यू नेवर एंड योर स्ट्रगल्स. या अचीवमेंट और लाइक ग्रोइंग अप इज चेंजिंग योर स्ट्रगल्स. जैसे जब मैं 3-2 साल पहले my struggle was scoring well in exams, but now it's probably doing well in life. About like it can be earning well, it can be doing well physically, whatever. Leveling up is not ending your struggles, it's like changing the type of your struggles.
Yeah, And like different, you're answering different problems now. Your exactly, problems are there. You're just हाँ, choosing different problems to solve. That's it, nothing तो else. जो सोल्यूशन की परस्यूट है और जो प्रोग्रेस और जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व करना चाह रहे हो, अगर तुम सही प्रॉब्लम ढूंढ लो तो वही परस्यूट एक बहुत ही पेनफुल और बहुत ही टीडियस प्रोसेस से जंप करके एक बहुत ही डिवाइन और एक बहुत ही सीरीन प्रोसेस में जा सकता है, और उसी Yeah, को हम लोग हैप्पीनेस का नाम दे देते हैं. हाँ, वो तो है. अरे, when you're happy, right, you don't even realize you're happy. या वो आई इतना वो मीन आई खतरनाक डोंट नो, रहता है. वन ऑफ माय मोस्ट और वो फेवरेट ऐसे ही शोज. होना चाहिए. ऐसे ही हाँ, होना. एक मेरी फेवरेट शो, मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट शोज है द ऑफिस, उसकी जो लास्ट लास्ट एपिसोड की लाइक आखिरी 1-2 मिनट की एक लाइन है. इज लाइक, आई विश देयर वाज अ वे टू नो दैट वी आर इन द गुड ओल्ड डेज बिफोर यू लेफ्ट देम. Yeah, like, हाँ. देयर इजंट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ Yeah, इट. yeah. Like, मतलब हाँ, this is one thing. Also, you only remember your boring days, by the way. Like, आप हाँ बोरिंग को मतलब बहुत, आज की दुनिया ने बोरिंग को बहुत वो मतलब गंदा कर दिया है बहुत होने से. अंडरमाइन हो गया है बोरिंग. हाँ, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है. लाइक, जो बोरिंग चीजें हैं ना वही याद रहती हैं. इवन अप में मेंशन्ड है, अप में जो बच्चा रहता है रसल, he's like, the only thing that I remember is the boring stuff. That, I Yeah, mean, that's the only thing that I want to remember also. Like, if yeah, you're bored, right, according to me, if you're bored, you're just misusing your freedom, because you had the time, you had the biggest pleasure you can, and you just didn't know how to channel it well. And you probably are channeling it in a way which is very unboring for someone else. Like, let's yeah, say if I go to a museum on a weekend, and I'm not a very artsy person. I want to be, but at least in the current scenario, I'm not. For me, that's boring. But you throw someone who loves art in that, it's the biggest life, like a life changing thing for them. So if you're yeah. bored, you're just channeling your freedom in a wrong direction. No, no, no. But the thing is, what I'm saying is, even if you're like doing something and you're sort of thinking कि हाँ ये स्टेट तो काफी बोरिंग है, बट आई थिंक होना चाहिए. जब आप हाँ, एक्चुअल में एक एम्बॉडी कर लेते हो पर्सनालिटी में आपकी एक कुछ चीज, देन इट बिकम्स बोरिंग एंड इट इज द थिंग दैट you're going to remember. So you of might as well course. beat the process and stuff. No? So like, yeah, it's Yeah. very good. Like, yeah. So matlab, that's true. Yeah. So The last thing that I want to conclude this with is yeah, I sure, don't sure. know, very, I think it's a song or it's a movie dialogue. I don't know. It's a something that really like affects me. Is like, you're never gonna appreciate the high highs unless you start going through your low lows. Yeah. And I think it's Steve Harvey or someone, again, very famous dialogue. Is like, I you've think it's from a already, song. I don't. I I think, yeah, how do you, yeah, like it's something, and it's like, if you've been through half, like if you're going through hell, right, why stop here? yeah, Like if yeah, so it's very important for you to like appreciate your low lows to actually be able to experience your high highs. yeah. And That the romanticizing your struggle is a big thing. Yeah. yeah, again, as you said, not over romanticizing Not it, too much. because Not as too much. J.K. Rowling said, like J.K. Rowling has a beautiful speech in where like only a fool will romanticize poverty. Yeah. It's an important thing, but there's no need to like feel good about it. It That's teaches what you a lot, but that's what most people in 20s are. They're just romanticizing their poverty. I'm I, like, मैं अभी कम अच्छा कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं आगे जाके अच्छा करूंगा, नहीं. वैसा नहीं होता What? है. No, you need. हाँ, वो It's माइंडसेट शिफ्ट ही इम्पोर्टेंट है यार. बट हाँ. it's not a zero sum game. Firstly, या life is not a zero sum game. या हम्म. At least one life. वो तो हमको पता भी नहीं है आगे क्या है. Exactly. तो अभी तो की जो ये 80 मैक्सिमम लाइक 80 साल की जो लाइफ है, इट्स नॉट अ जीरो अस्सी सम गेम. एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज व्हाट 70 74, 4 या 74 74 आई थिंक, या तो हाँ 80 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. 80 आई थिंक लग्जमबर्ग वगैरह में होगा. हाँ, जहाँ जहाँ मतलब, लोग सिर्फ एस्पेरेगस और सैमन खा रहे हैं. हाँ, तो और मतलब जहाँ 30 पे रिटायरमेंट है, तो अगले 50 साल तुम शरीर का ही ध्यान रख रहे हो, तो हाँ भाई मतलब, फिर 80 तो ठीक है. फिर तो 80 क्या 90 रहना चाहिए, बट ठीक हाँ है 80 मतलब देर तो देर नहीं. बट आई थिंक वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देयर इज नॉट, इट्स नॉट अ लिविंग एक्सपेक्टेंसी, इट्स अ ब्रीदिंग एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी 30 की है फिर. वो लाइफ एक्चुअल लाइफ जीना है, वो 30 तक जी वो रहे 30 तक ही है, हाँ, तो कोई मतलब नहीं है उसका. हैं. तो वही है. चलो फिर. So yeah, like this was the episode. So yeah, like
I hope like we hope you enjoyed it. For like we'll be coming up with a lot of episodes on this. I mean, not really the same topics, obviously, but yeah, like we're going to post things on our website. The website is we need to talk.site. We're going to post this episode. We're going to also like have engaging posts in the future, and yeah, so please I'm not saying I'm just so the main thing that we started this for is if any person, let's say 100 people watch it, if one person learns one thing from this episode, we are happy. That's it. That's why we are And not having like a views count or a likes no, count no, or we anything. don't want like Not any at of all. that. we, If you stumble on it, you feel like it, share. You feel like it, just pass it on to others. We don't expect anything from this. we are But yeah, not even gonna know that you shared. But yeah, it's like how you say that if you learn something, it's just better to pass on to the next two people. yeah, That's the sole purpose of it. Our yeah, conversations, honestly, we talk about this a lot of times, so we just started to document it. It's yeah, not that that's we it. are putting Yeah, in some extra effort to it. So that's it. yeah. This is something that we do almost every day. Yeah. But It's just a almost documentation of it. like at in a Zoom call, we almost do every day. I am pretty sure Shivang is bored of his background, but we're Yes. going to some changes. But yeah, like this is something that we do every day, and we're like, fine, we'll just record it The and we'll only difference is there's a slight less vulgarity, and Sumanth is wearing good clothes. That's okay, wow. the- Yeah, yeah, vulgar. Okay, wow. You brought a new thing. Okay, yeah. So that was it, guys. That was this. Like it was that was the end of this episode. So we'll be back with more content, and or it's not the content perspective, but it's also our thoughts and also discovering our minds, also exploring our minds, and also engaging in really good conversations. Again, we want to like just speak our hearts out. But yeah, thank you for watching. If you are watching till here, we really appreciate it. But Hey, yeah, I respect you more than appreciate you. yeah, we really appreciate it, and we also respect you guys. But yeah, let's end this. Okay.